हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं मीनल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लेट मी टेल यू, आई अपलोड वीडियोस ऑन एवरी मंडे, थर्सडे एंड संडे, सो मेक श्योर दैट you hit that subscribe button and join the family. So today I am sharing with you my everyday makeup look. I recently got a comment on my recent videos to share this video with you and obviously I will do that. So सबसे पहले मैं start करती हूँ गुलाब जल से। Summer का time है, there's nothing better than गुलाब जल. I just spray it all over my face. With so many years of trying so many products, let it be high-end or normal, I have realized nothing works better than natural and old ingredients. ऑल्सो यहाँ पे मैं स्प्रे बॉटल यूज़ कर रही हूँ, बट इसके अंदर जो प्रोडक्ट है इट इज़ नॉर्मल रोज़ वाटर, नॉट द क्लेंजर. नेक्स्ट आई यूज़ दिस लॉरियल एसेंस. नाउ आई नो दैट इट वॉज रिक्वेस्टेड कि मैं मेकअप वीडियो शूट करूं, बट दिस इज़ व्हाट आई डू ऑन अ डेली बेसिस, तो आई थॉट मैं ये भी इंक्लूड कर लेती हूँ साथ में टू नो द होल प्रोसेस. सो बिफोर डूइंग माई मेकअप, जैसे आप अपना स्किन का ध्यान रखते हैं वैसे ही मैं लिप्स पे भी ध्यान देती हूँ. नेक्स्ट आई एम गोइंग विद दिस सनस्क्रीन. भैया समर्स चल रहे हैं और नहीं भी चल रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट मिस सनस्क्रीन. I have realized how important it is, and it is high time that you do to apply a generous amount of sunscreen on your face on a daily basis. आप बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उससे मैटर नहीं करता है. Trust me on that, this is the best advice. And here I always use the leftover on my hands as well. कोई भी प्रोडक्ट जो आप अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा बच जाता है तो you can always put it on your hands. The best part about this sunscreen is that it is non-greasy and it works very well for my skin. Next I'm using this Chia Seeds Hydro Cream by the Face Shop, followed by the lotion. I always make sure कि मैं currently जो भी चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो सेम ब्रांड का हो, सेम रेंज का हो. I have realized कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप सेम रेंज का सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. सो क्रीम के बाद मैं लोशन भी सेम चीज़ का यूज़ करूँगी. So now my skin is all prepped to start with the makeup. Please avoid the pimples. So currently I'm using this foundation by Faces. मैं या तो शेड 03 या शेड 04 के बीच में यूज़ करती हूँ क्योंकि समर का टाइम है. मैं नहीं रेकमेंड करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएं. स्टार्ट विथ थोड़ा सा प्रोडक्ट और उसके बाद आपको लगता है तो थोड़ा और कर लीजिए. यू डोंट वांट टू चेंज योर नॉर्मल स्किन. ना हियर विद द हेल्प ऑफ द ब्रश मैं बहुत अच्छे से अपने फेस पे प्रोडक्ट लगा लूँगी और उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी. And as I always say, do not forget your neck and ears. So as I said, I like to use the same range of products. So because मैंने Faces का foundation use करा, here I'm using Faces का compact to set up all that foundation. Especially summers में compact तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. I always carry it with me. Next comes eyebrows, which are very important to frame your face. Here I am using this eyebrow pencil by the Face Shop, which comes with a spoolie on one side and on the other side is the eyebrow pencil. तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसको आईब्रो को सारे हेयर को अपवर्ड मोशन में अच्छे से ब्रश कर लूँगी. दिस इज़ हाउ आई लाइक टू डू इट एंड दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग हियर. सबके अपने अपने मेथड्स होते हैं, बट दिस इज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी बिकॉज आई लाइक टू कीप माई आईब्रोज लुकिंग वेरी नेचुरल. मुझे ज़्यादा थिन आईब्रोज भी पसंद नहीं है, ज़्यादा ओवर फिल्ड आईब्रोज, लाइंड आईब्रोज या बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल टाइप ऑफ आईब्रोज, आई डोंट लाइक इट. सो यहाँ पे जहाँ भी मुझे नेचुरल गैपिंग दिखती है वो मैं बहुत हल्के से उस आईब्रो पेंसिल से उसे फिल कर लूँगी. आई डोंट वांट टू ड्रॉ एन आईब्रो, आई ऑलरेडी हैव एन आईब्रो. सो आई एम जस्ट गोना फिल द स्पेसेस दैट आर देयर और उसके बाद वापस पूरी की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए एंड दैट इज़ इट. यू वुड लुक परफेक्ट. नेक्स्ट आई यूज़ द ब्लश. एज यू कैन सी दिस इज़ माई फेवरेट. वो पूरा टूट चुका है फिर भी मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं हूँ. दिस ब्लश इज़ बाय डेबोरा मिलानो. आई लव द शेड. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेड नेम भी डाल दूँगी जस्ट इन केस इफ यू वांट टू वंडर. सो हियर व्हाट आई लाइक टू डू इज़ बिकॉज आई हैव अ राउंडर फेस, आई लाइक टू पुट द ब्लश ऑन अपवर्ड मोशन, एक पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक जाते हुए, बिकॉज अगर आपका राउंड फेस है तो इट लुक्स बेटर. नीचे की तरफ नहीं लगाइए ब्लश, ऊपर जाते वक्त लगाइए और बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिए. वी डोंट वांट एनी हार्श लाइंस. व्हाट आई लाइक टू डू इज़ स्पेशली ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर्स बहुत प्यारा लगता है कि
मैं इसको नोज़ पे भी हल्का से लगा लेती हूँ, एकदम हल्के से, ताकि वो एक ब्लेंडेड दिखे एंड इट गोज़ लाइक विद द फ्लो प्रॉपरली फ्रॉम चीक टू नोज़. Now for my everyday makeup look, what I also like to do is same blush जो आपने यूज़ करा है आपके cheeks पे, I also like to put it on my eyelids. It gives a very nice look, as you can see the difference. Currently I've been loving eyeliners. Summers में there is this thing, I love eyeliners, so that's what I do. Next I'm also using this shimmer bronzer to get that bronzed plus the highlighted look, if you know what I mean. The same way as you contour, इसको बहुत ज़्यादा हल्के से लगाएंगे बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम LA कलर्स. बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा शिमरी है, तो इफ़ यू यूजिंग द सेम प्रोडक्ट मेक श्योर बहुत ज़्यादा हल्का लीजिए बिकॉज इट इज़ सुपर सुपर पिगमेंटेड. नाउ दिस विड, बिकॉज इट इज़ माई डेली का लुक, मैं कंटोरिंग करते तो बैठ नहीं सकती. दिस स्टिल गिव्स मी दैट फील्स एंड इट इज़ वेरी क्विक टू डू एज वेल. Now I'm also putting some highlighter on my lips and my nose and on my cheekbone, and also on my inner corner of my eyes. Recently I've discovered this कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, so I've started doing it. Now for my everyday makeup look, I like to keep my lips looking very very natural and nude. So this is one of my favorites. This one is by Maybelline. The shade will be in the description box. Now because it's my everyday makeup look, I do not put mascara on a daily basis. I don't want to lie to you guys. I recommend you also don't. So this was my everyday makeup look. I hope you have liked it. If you have, please like the video and subscribe to my channel. If you have any requests, please comment down below. I'll see you in my next video. Till then, be you, be beautiful.